welcome to the neotech by Ayush. Finally, after a long time, बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद हम वापस से आ चुके हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। आई थिंक मोस्टली 10 से 15 दिन का तक का हमने आई थिंक वीडियो वगैरह नहीं डाली। वैसे आ रही थी पाइथन में शॉर्ट्स वगैरह आ रहे थे। आशा करता हूँ कि वो तुमने देखा होगा बट हाँ ये रहेगा कि कंटिन्यूअस वेबसाइट मतलब फॉलो रहेगा। एंड बीच में आई डोंट नो 3-4 दिन क्या मतलब 15 दिन में थोड़ा सा I need a break, so I take a break. So and now it's finally time to do DSA, and also I am doing Python also. ठीक है, I'm currently I'm learning the data science and as well as the data analysis part, and so that's reason मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। देन मतलब उसमें ज़्यादा टाइम मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड हालाँकि मैं बहुत ही कम लाइव स्ट्रीमिंग करी है इस बीच में जो कि इतना अच्छा भी नहीं है बट हाँ ये रहेगी कि अगर हम कंटिन्यूअसली अच्छे से मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट लेट्स डू यार। चलो करते हैं एंड मैं लेट मी चेक यार गाइस सब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है या नहीं एंड कोई एरर वगैरह तो नहीं है। लेट मी सी। Okay, so let me check यार। Firstly, work fine. Let me open another. Oh, everything is work fine. Okay, so let's. अरे 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 ठीक है।
don't know too much about the Python. Let's do the max.
अरे ऑफिशियल फूड टेंस हो जाओ भाई, अभी अभी कहाँ यार, अभी तो स्टार्ट ही करा है दिन भर। सो जा आयुष। कहाँ है यार भाई, सो जा आयुष। अरे दी, अरे अभी सो जाऊंगा यार। अरे कोई नहीं, तू तो आ गई ना, बस ये है। अरे यार पढ़ रहा हूँ खाली, सॉल्व कर चल मेरे साथ क्वेश्चन। अरे हर्षित मोटी गेंडी, पढ़ ले गधे। हर्षित हर्षित, सॉल्व कर इस क्वेश्चन को। सो तो पहला हो गया हमारा वन, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। लाइक सो एक मैं सम ले लूँगा विच इज़ लाइक कैलकुलेटिंग द सम ऑफ लाइक नंबर, या तो मतलब यहाँ पे सम विच इज़ आई टेक द ज़ीरो विच इज़ नाउ कैलकुलेटिंग द सम। इसको तो मैं बाद में कर दूँगा। दैट सम विच इज़ currently ज़ीरो and the 1 then 2 then 3 and 12 and we have generate all the subarrays like and मैं क्या करूँगा वन एंड ईच एंड एवरी सब एरे में से मैं क्या करूँगा, like we have to find the minimum into mini equals to into max मतलब हाँ मैक्सिमम, क्योंकि हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं ना मिनी। एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, mini equals to like I have to determine the minimum which is uh, which is like minimum of which is like the minimum and यहाँ से हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे एंड अब सेल से, ये वाले सेल से क्या बोला इसको, एंड जो हमारा ईच सेल से निकालना है हमें, यानी कि चलो रफ वर्क करते हैं। लाइक आई एम यूजिंग द पेंट, so this is like our array like 1 2 3 12 1 2 3 12 1 2 and 3 and 12. So basically this is our array 1 3 and 1 2 3 and 12. So what I am doing here, so we have to generate all the sub arrays like the first array is 1 and the second one is 2 and like I'm taking the third sub array which is 3 and like the fourth sub array which is like the 12. But
So this is the first subarray we have to determine here. But basically we have to generate like two and three arrays. So basically what I'm doing here, तो अगर अब मुझे इसमें से minimum निकालना है, so we have to determine the minimum. So इसका मेरा minimum निकला 1, इसका निकला मेरा 2, then इसका निकला, we have to determine the minimum is 3, and जो इसका जो minimum जो मेरा निकला वो मेरा निकला 12 निकला. Okay, so what I am doing here, we are adding them. We are adding them means we have to now calculate it. We so 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Like the so the total answer is here 18. But we have to determine the minimum. तो इसमें एक मिनिमम सब एरे सम वाला क्वेश्चन था. मिनिमम सब एरे सम. अब सब एरे सम एक ये वाला क्वेश्चन था. आई थिंक ये ही इसका राइट आंसर होगा आई थिंक. नहीं मतलब कि वही होगा. जैसे मैक्सिमम सब एरे सम था ना, उसको हम किससे कटान से एल्गोरिथम से सॉल्व करते थे. लेट मी चेक यार. आई थिंक मैं पीछे का भूल गया, लेकिन मैं एक बार चेक कर लूँ कि किसका करते थे. एक मिनट दूसरी दुकान. चलो कोई नहीं. हाँ. ओके सो तो उसने बोल रखा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर इसको ले लाइक यहाँ से 1 ले लूँ, 1 ले लूँ, एंड यहाँ पे से मैं 2 ले लूँ, एंड तीसरे से मैं 3 एंड 12 ले लूँ, लाइक 3 एंड 12 ले लूँ. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ द मिनिमम विच व्हाट इज द मिनिमम, लाइक हियर 3 is the minimum, and here from here the 2 is the minimum, and यहाँ से अगर मैं देखूँ so 1 is minimum. So 1 plus 1 3 3 4 5 and 6, so answer is 6. Okay, so इतना तो हमें आ गया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया. ओके, so this is our question, like okay, so मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ. ओके सो फर्स्टली क्या करेंगे, या तो हम कटान से एल्गोरिथम से भी आई थिंक इसको कर सकते हैं. आई थिंक मैक्सिमम सब एरे सम के लिए कौन सी यूज होती थी. सब एरे सम एल्गो एल्गो कौन सी एल्गोरिथम यूज होती थी. कटान से, ये हाँ कटान से एल्गोरिथम. तो मैं वही लगाने की सोच रहा हूँ, बट इंस्टेंट ऑफ लाइक अप्लाइंग द कटान से एल्गोरिथम, कैन आई अप्लाई लाइक brute force approach, which can help me to determine instead of the doing two and three things. So like I have to int mini, mini ले लेता हूँ इसको, mini which is like int max, which is used to calculate the maximum minimum number calculate. So यही कर रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ. int I0 I less than dot size, and I plus plus, and for integer j which is 0, j is lesser than nums dot size, and j plus plus, and now sum की value भी 0 बदल जाएगी. So I am taking the sum which is currently the 0. I think reflection आएगा, I think तो मुझे जहाँ तक लग रहा. So the what I am doing here, मैं मिनिमम निकाल के सम प्लस एरे ऑफ जे कर लूँगा. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न सम कर दूँगा, जो कि बेसिकली हमें सम सम कैलकुलेट करने के लिए. बट अभी आंसर तो मुझे पता है कि कुछ गलत ही आने वाला है. ओके सो द नम्स, बट not imj is like I return a sum, not I'm taking here.
सम की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी, बट लाइक सम कैलकुलेट करने के लिए होगा ना अदर चीज़। लाइक आपको 1 2 3 You have given an integer number the cost or the cost रुको the cost of an array value from first element. For example, the cost of 1 2 3 is 1, where the cost of 3 2. Okay, you need to divide nums into the three disjoint continuous subarray. Okay, so मैं इसको क्या करूँगा कि 3 कंटिन्यूस डिसजॉइंट सबएरे में कर दूंगा कन्वर्ट, ठीक है। ओके एंड द मिनिमम एंड सो एंटर लाइक तीन ही वो लेना है ना, तो तीन ही में ही जाता है। रुको, सो व्हाट आई एंटर तीन ही रेशियो इंटर सबएरे लेना है। अरे इंटर सम बीट इज करंटली 0। अब पाइथन की आदत पड़ गई है यार। कौन सा? एंड एक मुझे आंसर लेना पड़ेगा विच इज कैलकुलेटिंग द इंट min एंड अब मैं क्या करता हूँ, आइटरेट करता हूँ फॉर इंटीजर i0 i lesser than some sort of size i plus plus and देखो can I like take from here like two pointer approach equal 2 plus 1 3 and which is the minimum. Okay, or integer j equals to 0 and j is lesser than number dot size and increment कर देते हैं j को and what I'm doing here answer equals to यहाँ पे minimum of आंसर और इसका एडिशन दे देता हूँ तीन नंबर तीन का। ओके, सो मेरा शम के ऊपर क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ लाइक उसके अंदर नम्स ऑफ 0 तीन ही जॉइंट है ना, नम्स ऑफ 1 एंड देन नम्स ऑफ 2 ये आ जाएगा एंड now the semicolon, now sum and we have to return the answer. So let's see it work or not. Okay, currently not working. I don't know. Let's fix this. So we have to determine the inter min. So can I take inter max, like run it? ये को मैं I plus 1 से start करना चाहता हूँ, like two pointer approach की तरह, क्योंकि हमें 3 नीचे disjoint सेट लेना है। Okay. हम सब 0 I and J
इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 एंड 2 आई एंड जी ले ली क्योंकि चेंज होती रहेगी वैल्यू। कभी ये सही हो रहा कभी वो गलत हो जा रहा। आई को लेता हूँ मैं 1 से एंड ऐसा करता हूँ। हाँ समझ गया मैं। आई को 1 से आई प्लस 1 2 से एंड 0, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सम कैलकुलेट करता हूँ। लेट सबमिट इट हो जाएगा। इतना टफ नहीं था ये, बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा। या स्ट्रिक वन बन रही है बट इसको और भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेट अस सी, लेट्स सी and in terms of 0 peak of n, I think I plus 1 and j nums of I 0 nums of I and इसको क्या करते हैं I plus 1। इसको करके देखिए क्या। ओके आई थिंक ओवरफ्लो हो गया memory allocation problem. Big O of n square. And can I solve like ठीक है इसी से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन है। टॉपिक एरे होगा हमारा, एरे शॉर्टिंग मेरे वीकली डिस्कशन। तो आई थिंक यार आज के लिए तो हमने ये क्वेश्चन कर दिया, तो बेसिकली मैंने करा क्या देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखना मैंने एक इसको थोड़ा यू हैव टू डिवाइड इट नम्स इनटू द थ्री डिसजॉइंट कंटीन्यूअस सब एरे। ओके सो ऐसा नहीं था तीन ही कोई लेना था तो तुम तीन ही कोई ले लो, ऐसा नहीं है। So what I'm doing here, I'm like copy this one and like paste it here, paste it here. Okay, so what I'm doing here, like taking some, like take some which is currently here 0, some which is currently here 0. So and I'm taking one rough like array size array, and here is 1 2 and 3 3 2 3 and the 4 and the sum which is currently and answer। आंसर पे क्या स्टोर करा है हमने इंट में, मतलब कि सपोज करो कि माइनस वन रेंज का है कुछ मैक्सिमम विच इज लाइक क्वाइट इनफाइनाइट लिख लो ठीक है, मतलब मैक्सिमम कोई नंबर है ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग आई एम पॉइंटिंग आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं पॉइंट आउट क्या करता हूँ इधर पे, फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 एंड टिल गोज टू दैट एंड दूसरा जो पॉइंटर है आई विल टेक आई प्लस 1 फ्रॉम हियर equals to I plus 1 and till goes to n then j plus। so firstly क्या होगा कि जब हमारा I equals to 1 होगा then goes to the inside j equals to I plus 1 so is like j is move here, ठीक है। j हमारा पॉइंटर यहाँ करेगा, j हमारा पॉइंट यहाँ करेगा। so अब क्या करेगा सम, सम के अंदर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सम सम के अंदर क्या आया नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ जीरो तो बेसिकली वैसे आएगा 1 प्लस nums of I equals to 1 which is 2 प्लस यहाँ पर I plus 1 3, 3 तो 5 और ये क्या आएगा 6 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया मिनिमम, तो हमने रिटर्न क्या कर दिया आंसर विच इज 6। ओके, सो बेसिकली दिस थिंग विच इज 6। अब हमारे क्या होगा इन द नेक्स्ट वीक, हमारा क्या होगा, फिर से इसने क्या करा, आई विच इज टेकिंग सम विच इज एंटीमैक्स, आई बिकम हियर 2, so which is now goes till nums of side, and अभी क्या हमारा ये क्या होगा यहाँ पे nums of 0 1 प्लस आई वैल्यू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, नहीं यहाँ पे 2 + 3, 4 3 7 2 9, 9 और 6 में से कौन सा मिनिमम है 6, तो उसने क्या आंसर रिटर्न करा आपका 9। तो यही था आज का, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा था जो कि आसानी से हो गया। फर्स्ट में मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया जब मैंने वो वाला स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, बट करेंटली इसके लिए बढ़िया है एंड हो गया है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लाइव। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे पे इसी